अकेले सोना मुश्किल था मेरे लिए, डर लगता था। अभी तो मैं किसी से लड़ती हूँ तो कहते वो चुप रहे ना, मेरे से पंगा मोल मत लेना, तो सोचते हो कि भैया अकेली रह रही है। इसके भाई तो बोलते नहीं, भाई जाए बाढ़ में। मेरे साथ बहुत सारा संगठन है, कितनी महिलाएं, लाखों की तादाद में हम जिसके दरवाजे जाके खड़े होंगे ना तो तुम लोग तो नजर भी नहीं आओगे। આપણી પ્યાર ન લાગે કે આપણી પ્યારી હોય તો સારું, કોઈ સામા મળ્યા તમારે સુકન ના લે, अब सुकन लागे। यहाँ आने के बाद, उनके साथ जुड़ने के बाद बहुत हो जाता है, मतलब महसूस नहीं रहता है हम अकेले नहीं हैं। In the heart of Delhi, more than 200 women have gathered to share their stories. Stories of being single in a country where a man is considered central to dignity, to life in all its aspects. This is a convention of the Rashtriya Ekal Nari Adhikar Manch, or National Forum for Single Women's Rights, now in its 15th year, spread across 9 states. Each of the states have their own Ekal Nari Sangathan or local chapter that works with the main aim of giving support to one of India's most vulnerable categories, the single woman. The landscape of rural India seems to have very little space for single women. In fact, their singlehood is virtually seen as a crime. They're denied rights to property, to inheritances, and often face exploitation from within their own family. They have nothing to call their own, except perhaps a movement which in its 15th year is the only one of its kind. The Ekal Nari Sangathan fights for the rights of single women, and as my colleague Priya Thuvasari found, has become a lifeline for them. जब मेरी बेटी 3 दिन की थी, मेरे हस्बैंड ने कि मैंने ऐसी औरत को रखना नहीं चाहता, मैंने तो जाओ इसको तलाक दी, तलाक दी, तलाक दी। फैमिली में थी तो मेरी माँ थी केवल। माँ के लिए भी मेरे भाई ना भले बुरे बोलते थे, मेरी माँ का सपोर्ट था। अभी 5 महीने पहले मेरी माँ गुजर गई, बस। Parveen Jahan is 34 and single. In the past few years, she's heard the worst abuses from her husband who tortured her, from her brother who called her a burden, and from a society that sees her as a sinner for living alone. डर था इस चीज का कि है ना, अपन खुद अगर तक तलाक लेंगे तो ये समाज वाले भी क्या कहेंगे, रे ऊपर वाले भी अपनों को गुनाहगार समझे कि ये ना अपने आदमी से तलाक ले रही है। तो इस चीज का डर, फिर धीरे धीरे ऐसे संगठन में जाते रहे, चलते रहे, सीखते रहे, बातें करते रहे कि ये ना एक डोकला बनाया हुआ है मुल्ला मौलवी का है ना, कि ऐसा कुछ नहीं है। तब जाके फिर हम दूसरों को भी यही सलाह देते हैं। Parveen lives in this house with her 15-year-old daughter Naveen Jahan. A polio attack at a young age left her limping. When she was 18, she was married off to a man who was violently abusive. He would accuse her of being with other men, forced her to cut her long hair. पहले मेरे बाल बहुत लंबे थे, तो जब मैं ऐसे चोटी करके जाती थी, उन्होंने कहा इसको बालों को ना ऐसे फोल्ड करके बांधो, खुले नहीं छोड़ोगी। मैंने कहा क्यों? कि बस मेरी मर्जी, मैं क्यों ऐसे रहना पड़ेगा। तो अगर मैं मेरे बाल रह गए, मैं कैसे भी बांधू, इनको खुले छोड़ू या कैसे भी बांधू, तो कैची लेके कि मैं सारों को उड़ा दूं, तो फिर तो क्या करेगी, फिर किनको खुला छोड़ेगी। For years she contemplated running away, but feared for her daughter and got no support from her own family. तलाक नहीं हुआ दीदी, तलाक तो हमारे यहाँ पे ना, मैं तलाक तो ले लेती, इतनी सक्षम हो गई मैं, अब मेरे को इतनी सक्षम कर दी। पर क्या हुआ कि ऐसे कहते हैं हमारे गांव में लोग कि तू अगर तलाक ले लेगी, उससे तो तेरी बेटी का जो हक है ना वो मारा जाएगा। ये पुलिस ही बनना चाहती है। वो नहीं कह रही कि जिसने मेरी मम्मी को ना इतना मतलब दुख पहुंचाया ना, उन सबसे मैं गिन गिन के बदला लूंगी। बदला मैं जब ही ले सकती हूँ जब मैं पुलिस बन सकती हूँ। The torture intensified till one day she had little choice but to leave, and with credit from the local moneylender bought this house, a one-room hut in the outskirts of Kota city. अकेले सोना मुश्किल था मेरे लिए, डर लगता था। एक बार तो एक आदमी आ गया था यहाँ पे, हम दोनों माँ बेटे सो रहे थे,
और वैसे ही गेट बजाया। मैंने गेट खोला नहीं, आवाज़ पहचाने बिना। उनका कौन बोल रहे हो? कि मैडम काम है थोड़ा सा, गेट खोलो आप। उनका काम क्या है भाई बताओ? कि ना आपसे बात करनी है। भाई मेरे को तो कोई बात ही नहीं करनी है, आप जैसे आए वैसे चले जाओ, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी अभी। खामखा आपकी भी इज्जत डाउन होगी, मेरी भी दाग लगेगा कि इसके पास रात में कैसे आए हो। तो बड़ी मुश्किल से हाथ जुड़ा के उसको मैंने घर भेजा। हम दूर तक चलते रहे। Desperately looking for some support, Parveen found the Ekal Nari Sangathan. काश अगर एकल नारी शक्ति संगठन हमारा साथ नहीं देता तो हम महिलाओं का क्या होता? वे तो उसे ही घर में बिलक के रो के मर जाती। अभी तो मैं किसी से लड़ती हूँ तो कहते वो चुप रहे ना, मेरे से पंगा मोल मत लेना। तू सोच रही कि भैया अकेली रह रही है, इसके भाई तो बोलते नहीं, भाई जाए बाढ़ में। मेरे साथ बहुत सारा संगठन है, कितनी महिलाएं लाखों की तादाद में हम जिसके दरवाजे जाके खड़े होंगे ना तो तुम लोग तो नजर भी नहीं आओगे। Today, Parveen has dreams for herself and her daughter, from basic ones like getting her single women's pension, which in Rajasthan is 500 rupees per month, to more ambitious ones. मैं बीए करूंगी, बीए करने के बाद एमएसडब्ल्यू करूंगी, एमएसडब्ल्यू करने के बाद फिर मैं बनूंगी आंगनबाड़ी सुपरवाइजर। ये मेरा लास्ट स्टेज है। It took Parveen more than a decade to transform her life. Out of a, one rupee. Well known and a respected activist, Jenny Srivastava, who founded the Ekal Nari movement, says the battle single women face is intense and often endless. This was, as I say, 1999, 2000, and from there it went on. Originally from Canada, Jenny made Udaipur, Rajasthan her home in 1970, where she started working on tribal issues through her group ASA. We organized a widow convention, and it was 425 widows from 20 districts of Rajasthan. And it was a powerful event, residential, 4 days on the outskirts of Jaipur, because we wanted the government to attend and notice the issue. It was grassroots work that led her to realize the basic truth, that there were no groups working on issues of single women. One thing we can say of what has changed is that there are hundreds and thousands of single women across the states that are where single women are organized, who now feel they're not alone anymore. गा बीमार वेदा तो यू के डाकण नहीं या यही से बीमार कर दी। सोरा सोरी बीमार वेदा तो डाकण ने यही से बीमार कर दी। सांस है, बूढ़ी है, वो भी मर जाए तो वो भी मर माते। दुखियारी तो बहुत दुखियारी। नाइन बुलाते थे उनको। हाँ। तो डर के भाग के यहाँ आ गए। हाँ। घरवाला के है, सोरा सोरी है, सब बटे से। वो पिल्लर है, इनके कपड़ा पीड़ा बाने भी। On the outskirts of Udaipur, Rajasthan, we accompanied Pawan Udani, program coordinator of the local Ekal Nari Sangathan that works for the rights of single women. Pawan is looking for Hirki Bai, a Bhil tribal woman who fled her own village when she was accused of being a Dayan or witch. At her small hut where she's been living for the past 1 month, Hirki Bai begins to tell us her story. At 19, Hirki was married off to a man from a prosperous landowning family. She had 6 children with him. औरत को निकाल दो यूं, मार पामना यूं के देवर जेठ यूं के राख थोड़ा छोटी ले ले, निकाल दे, दूसरी औरत कर रहा हूँ। Her brother-in-laws wanted to take over her husband's share of the property and saw her as a possible impediment to their plan. तभी 5 आदमी बोले, मैं अकेली बोलूं, मारी कौन मानी? The torture started years ago. First, Hirki Bai's brother-in-law started beating her violently, then publicly accused her of practicing witchcraft. Once she was declared a witch, a denouncement tantamount to a death sentence in rural India, the entire village began baying for her blood. गा बीमार वेदा तो यू के डाकण नहीं या यही से बीमार कर दी। सोरा सोरी बीमार वेदा तो डाकण ने यही से बीमार कर दी। सांस है, बूढ़ी है, वो भी मर जाए तो वो भी मर माते। मार लड़ाई देवर जेठ से दूसरा लड़ाई नहीं
Fearing for her life, Hirki Bai left her village, taking her 6 children, and found shelter 20 kilometers away in Badgam village. Pawan Udani tries to console Hirki and counsel her on her rights to a part of the marital property and her belongings. The next day, Pawan and Hirki return to her village. We follow. ये क्यों गांव छोड़ के चले गए थे? हमारे गांव का आदमी लाते इसको बुलाते बनवाते मैं बात नहीं करनी। आप क्यों बात नहीं करेंगे? नहीं बात करता हूँ, गांव वाला बहुत भी बोलेगा सब। देखो एकदम दो आदमी बुलाता हूँ मैं बात करता। When Hirki tries to pick up her belongings, her brother-in-laws are rude. Her mother-in-law refuses to talk, and Hirki Bai is petrified of the villagers. Pawan tells us that the battle for rights has only just begun. Life as a single woman will be tough for Hirki. The fight to get an official divorce, claim an allowance, a share in the property for her children will take years. In her new village, Hirki Bai, with the help of the Sangathan, will have to fight the stigma of being declared a witch. The situation at first seems impossible, but after 15 years of working on the ground, members of the Ekal Nari Sangathans across the country have greater confidence, faith and evidence of women who have transformed their lives with the right intervention and support. Like Veermati from a slum basti in Jahangirpuri in Delhi. मुझे डर लगता था अपने ससुराल वालों से, वो 15-15, 20-20 आते थे ना, फिर मैंने कहा ये तो मैं डरती रहूंगी, ये मुझे डराते रहेंगे, फिर तो मैं सीधी हो गई. Confident, strong, she works as a counsellor to empower single women on their rights. हमारा है कि हम एकल औरतों को संगठित करें, संगठन. Veermati's life today is a far cry from what it was just a few years ago. She was in 10th grade when she was married into a Jat family from a village in Haryana. A year later, days after she'd given birth to a daughter, her husband died, and according to custom in her community, she was forced to marry her brother-in-law. 80 में 16 जनवरी को मैं सिंगल हुई थी, तो पति के बाद में चादर उठाने की रस्म हुई, पंचायतें हुई. जब तक वो जिंदा रहे, उन्होंने कभी उसको एक गिलास पानी नहीं देने दिया. उनका ये कहना था सबसे बात करना, इससे बात नहीं करना. और मुझे सबसे बड़ा ठेस वही थी कि जब मेरे उनके जीते जी इस व्यक्ति से बात नहीं करने दी, और अब पंचायत ने मुझे इसी के साथ. Veermati had some land given to her by her father. The marriage to her brother-in-law was mainly designed to ensure that the property could be taken over by her husband's family. The torture started within days and got worse when she bore her new husband a daughter. चादर ओढ़ने के बाद 10 महीने के बाद मेरे साथ बहुत हिंसा होने लगी, रोज मारपीट होती थी. मारने के बाद वो मुझे मिर्ची खिलाता था. वो अयाशी किस्म का था. इस कमरे में ये छत भी नहीं थी पूरी. उसको रोज रहता था कि ये बेचूंगा बेचूंगा. मैं सिलाई करती थी, सिलाई करने के बाद भी वो मुझे खाने नहीं देता था. वो थी. With no support from her maternal family, Veermati would often contemplate suicide, until one day she came in contact with the Ekal Nari Sangathan. It would be her first step towards a new life. एनजीओ में मैं अपना केस लेके गई थी, और मैं चाहती भी थी कि कोई ऐसी जगह हो जहां औरत अपनी बात कह सके, कि जहां औरतों का दुख तकलीफ एक जैसी लगती हो. With the Sangathan's support, Veermati found the courage to battle on. She began work as an Anganwadi worker and set up a stitching unit. As she became financially independent, she stepped up her demand for a divorce, which she got 2 years ago. मैंने कुछ नहीं मांगा, मैंने सिर्फ तलाक मांगा. तलाक इसलिए मांगा कि रोज रोज के मरने से अच्छा है एक बार मर जाओ. जो दिन मैंने देखे, भगवान ना करे कोई ऐसा दिन देखे. Today, Veermati lives alone in a 3-storied house she's built for herself and her daughters. मेरे को ये कहते थे पता नहीं कौन सा काम करने जाती है, अकेली जाती है, ये खराब औरत है, गंदी औरत है.
जो पीछे से बोलते थे लोग, मैं बोलती थी ठीक है तो तुम साबित करके दिखाओ कि मैं खराब हूँ। मैं सोचती थी कि मैंने 10 पढ़ा है, मेरी बेटी मुझसे आगे पढ़े। तो संस्था में पता चला है वीर माने ताकत और मति माने बुद्धि, तो मैंने कहा अच्छा ये भी हो सकता है। फिर मैंने कभी नहीं सोचा।